Hello students, I am Monica Soral from MB International School, Nayagaon. Today we will be doing the 6th chapter, part 2 of The Making of a Scientist from your book Footprints Without Feet. Yes, now there in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. अब एब्राइड को वो बटरफ्लाइज वाला सिचुएशन तो उनकी वो उन्होंने बोला कि अब ये बहुत टीडियस हो गया. तो देयर ही वेंट 7th ग्रेड में जब वो था 7th क्लास में दैट टाइम काउंट्री साइंस फेयर में एवरीवन वाज गेटिंग समथिंग और द अदर, क्योंकि उन्होंने कुछ इन्वेंट करा था, कुछ बनाया था. साइंटिस्ट दे हैव टू डू समथिंग और द अदर ना. एब्राइड को कुछ भी नहीं मिला था तो ही फेल्ट वेरी बैड दैट मैंने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा जो दैट इवन आई शुड गेट अ अवार्ड. नाउ व्हाट हैपेंड, सी देन his entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. He realized that the winners had tried to do real experiments but simply make a neat display. अब उन्होंने क्या देखा कि उसने तो स्लाइड्स में क्या फ्रॉग के वो टिश्यूज दिखाए थे माइक्रोस्कोप में, बट उन्होंने देखा कि दूसरे साइंटिस्ट जो थे ना उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स बताए है ना. एंड रियल एक्सपेरिमेंट और उनको जो डिस्प्ले किया था दैट वाज वेरी नीट एंड वेरी क्लियरली सीन, वेरी क्लियरली अंडरस्टूड. तो उसको उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव spirit that drives Richard Albright was appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do real experiments, he said. The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. अब उन्होंने क्या सोचा, अब नेक्स्ट फेयर में ऐसा नहीं होगा, मैं भी रियल एक्सपेरिमेंट्स करूँगा. और एक्सपेरिमेंट्स किसके होंगे? इंसेक्ट्स के बारे में, जो मैंने इतने टाइम तक स्टडी किया था. About that I will do. So he wrote to Dr. Urquhart for ideas and back came in the stake of suggestions for experiments. Those kept Albright busy all through high school and led to prize projects in county international science fair. अब उन्होंने जब लिखा जो एक्सपेरिमेंट्स करते थे उनको एवरी टाइम ही यूज्ड टू गेट द अवार्ड फॉर दैट, क्योंकि वो बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट्स, रियल एक्सपेरिमेंट्स करके भेजने लग गए. फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, 8th क्लास में Albright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. अब उनको क्या देखना था, 8th क्लास में उनको ये पता चल हुआ कि ये मोनार्क्स की डेथ कैसे होती है, कौन सा ऐसा डिजीज़ है जो उनको किल कर देता है. सो अबाउट दैट डिजीज़ ही वांटेड टू नो. Albright thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real results, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. अब उनने क्या सोचा कि शायद ये कैटरपिलर्स का जो उनकी जो डेथ होती है मोनार्क्स की, वो जो बीटल्स हैं उनकी वजह से होती है. तो उन्होंने उनके साथ उनको ग्रो अप करने दिया एंड ही वांटेड टू सी वेदर व्हाट ही थॉट वाज रियल एंड ही फाउंड. वो सक्सीड हो गए उसमें और उन्होंने बहुत अच्छा उसका एक्सपेरिमेंट बनाया एंड ही वन फॉर दैट. द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स. अब नेक्स्ट फेयर में उनका क्या था कि वाइसरॉय जो बटरफ्लाइज होती है वो मोनार्क्स की कॉपी करती है, तो वो उसके ऊपर उनको एक एक्सपेरिमेंट बना था. थ्योरी वाज दैट वाइसरॉयज टुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स. वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स. सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइक दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर. अब जो वाइसरॉयज है ना उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता था तो वो बर्ड्स का डिनर बन जाती थी, बट मोनार्क्स जो उनकी जैसे दिखती थी वो उनको बर्ड्स खाना पसंद नहीं करते थे. तो वो उनको एक एक्सपेरिमेंट बना के देखना था कि ऐसा क्यों है. Albright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. He found that a starling would not eat ordinary bird food. It would eat all the monarchs it could get. Albright said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarchs. This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. अब ये वाला जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया देखने के लिए कि बर्ड्स मोनार्क को खाती हैं या कैसे खाती हैं और क्यों, क्या होता है उनके साइड, तो दैट ही फाउंड एंड दैट प्रोजेक्ट ये जो काउंटी साइंस फेयर में उनको वहाँ पर भी प्राइज मिली थी. देखो, इन दिस सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च ऑफ दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट्स हार्मोन. इनडायरेक्टली इट वॉज लेड टू न्यू थ्योरी ऑफ लाइफ सेल्स. अब एक न्यू थ्योरी उनको बनानी थी लाइफ सेल्स के बारे में. द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल. वॉट इज द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा. आई टोल्ड यू, उनको ये पता करना चाहते कि गोल्ड स्पॉट्स जो मोनार्क के ऊपर होते हैं वो कैसे होते हैं.
how they get that thing, na? How they get the spots, how the some monarchs are plain, how they get that line, that designs, वो सारा उनको पता करना था. Everyone assumed the spots were just ornamental. Albright, Dr. Erghert didn't believe it. To find the answer, Albright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. देखो उन्होंने क्या फाइंड आउट करा कि ये जो स्पॉट्स होते हैं वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिससे बटरफ्लाई का डेवलपमेंट होता है. नाउ डॉक्टर डिडंट बिलीव हिम दैट ये ऐसा भी होता होगा क्या, वो तो जस्ट इसको ऐसे ले रहे थे कि होगा ऐसा डिजाइन, बट ही फाउंड आउट. सी दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर. इस प्रोजेक्ट के लिए उनको फर्स्ट प्राइज मिली काउंटी फेयर में. इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर zoology. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. As a high school junior, Richard Albright continued this advanced experiment on the monarch pupa. That year his project won first place in the international science fair and gave him another chance to work in the army laboratory during the summer. इसी के जो स्टडी पे उनको प्राइज पे प्राइज मिलते गए. एंड इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट टू स्टेप फर्दर. ही ग्रू सेल्स फ्रॉम द मोनार्क्स विंग इन अ कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स. देखो उन्होंने एक फिर नया एक्सपेरिमेंट बताया कि गोल्ड स्पॉट्स में अगर हार्मोन अपन नॉर्मल बटरफ्लाई को देंगे तो उससे उनका डेवलपमेंट होगा. नॉर्मल बटरफ्लाई के जो विंग्स और स्केल्स है ना उससे उसका डेवलप होगा. दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्राइज अगेन zoology इंटरनेशनल फेयर. ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन ड्यूरिंग फर्दर वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज freshman year at Harvard University, Albright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. Using laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormones chemical structure. यहाँ जब वो गए उस लेबोरेटरी में वहाँ पर उनको हार्मोन स्ट्रक्चर के बारे में भी उनका पता चला. सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने यूज़ करे और ये गोल्ड स्पॉट्स में से उन्होंने केमिकल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो उन्होंने फाइंड आउट करा. अ ईयर एंड अ हाफ लेटर ड्यूरिंग द जूनियर ईयर, Albert got idea of his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. When he saw these photos, Albert didn't shout eureka or even I've got it, but the belief that along with this his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to the one of the biology's puzzles. How the cell can read the blueprint of its DNA. अब blueprint DNA का कैसे पढ़ता है, सेल्स कैसे रीड कर सकते हैं, वो उन्होंने एक थ्योरी बनाई, वो उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश करी. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form of and function of the cell. Thus DNA is the blueprint of for life. अब DNA क्या होता है, वो blueprint of the life है. It is telling you about the cell. It is telling you how it is developed. पूरी उसकी डिटेल जो एक्चुअली बताता है वो DNA बताता है. ये उन्होंने फाइंड आउट किया. Albright and his college roommate James R. Wong worked all the night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. उन्होंने इस पे पूरा एक ड्राइंग पिक्चर्स बनाए, उन्होंने इस पे थियोरी लिखी समझाने के लिए कि ऐसा कैसे होता है. Surprising no one who knew him, Richard Albright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1,510 students. He was the second student, second rank उसको मिला था. Albright went to become a graduate student researcher of Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. If the theory proves correct, it will be the big step towards understanding the process of life. It might also lead to new ideas. अब अगर ये theory सही होती है तो उससे पता चल जाता है कि लाइफ DNA का क्या रोल है लाइफ में, how the cells develop and how the DNA helps in. ये सारी चीज़ें उनको पता चल जाएगी diseases के बारे में सी. It might also lead to new ideas preventing some types of cancer and other diseases. ये इसमें भी वो help कर सकती है. All of this is possible because of Albright scientist curiosity. His high school research into the purpose of spots in monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. Richard Albright has been interested in science
since he first began collecting butterflies. अब ये जो theories इतनी सारी जो सेल के लाइफ के बारे में पता चला, वो सिर्फ एब्राइट के जो इंटरेस्ट था बटरफ्लाइज के ऊपर, उनके स्पॉट्स के ऊपर, उससे ये सारी कहाँ तक की थ्योरी आ गई देखो. एंड ही वॉज सो क्यूरियस अबाउट इट, इससे उनको सबको हेल्प मिल गई. एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टिंग इन साइंस एंड नाउ बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ इन टाइम interest. Albert also became a champion debater and public speaker, good canoeist and all around outdoor person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibition. School Richard Albert was straight a student. Because learning was easy, he turned a lot of his energy towards the debating. अब देखो वो सिर्फ ही वॉज अ ऑलराउंडर ना, एक्सपेरिमेंट्स में नहीं, वो डिबेटिंग करने में क्लास में हमेशा टॉप ए स्टूडेंट था वो. एंड इन एवरीथिंग ही वॉज एक्सपर्ट, एवरीथिंग वॉट एवर इट वॉज. इट ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड ए वेहरर, हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स. Dr. Weherer was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas. Richard always give that extra effort. Mr. Weherer said, what pleased me was here was his person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. Richard was competitive. Mr. Weherer continued. अब वो competitive spirit भी थी उसको, उनको ये था कि मुझे जीतना है, और उस जीत की वजह से वो बहुत हद तक कोई भी थ्योरी जो थी इम्पॉर्टेंट वो बताने की कोशिश करते थे और बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते थे. उसके पीछे आर्ग्यूमेंट, उसके पीछे डिबेटिंग बहुत अच्छी तरह से करते थे. एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स और इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन. Albert has these qualities from the time the book The Travel of Monarch 10 opened the world of science to him. Richard Albright was never lost his scientific curiosity. ये जो क्यूरियोसिटी उनकी जो थी वो किस वजह से बनी थी? सिर्फ उनकी मदर ने जो ये बुक ला के दी थी उनको, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, इनकी वजह से वो बच्चा जो घर पे बैठा रहता था वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया था. दिस इज द स्पिरिट. व्हेन यू आर ईगर टू फाइंड समथिंग, if you want to achieve something, you will achieve it. This is shown in this chapter. Thank you.